नमस्कार आपण समस्त को यही वीडियो बहुत बहुत स्वागत। तो आज ये वीडियो में आप सहित +3 5th सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर कोर्स 11 यूनिट 3 जहाँकि लॉक एंड रूसो चैप्टर समस्त इंपोर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चन आंसर मैं आपन डिस्कशन करी। आप पूर्व मुझे 1 और 2 ऑलरेडी वीडियो बन सारी जो देखना आमर प्लेलिस्ट में देखिपारे। तो चलते स्टार्ट करवा वीडियो आगे मुझे कहबी आप पीडीएफ नोट्स किपर भाव डाउनलोड करेंगे। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन जॉन लॉक। जॉन लॉक को ऊपर गोटे लोड देख तो यही जो डिस्कस करबा 1 मार्क्स क्वेश्चन किसी आसो आप मन ध्यान शुणु। जॉन लॉक वाज बोर्न इन इंग्लैंड इन 1630 तो 1632 एडी जॉन लॉक इंग्लैंड रे जन्मग्रहण करथिले। ही रिसीव्ड हिज इयरली एजुकेशन एट वेस्टमिनर एंड ऑक्सफोर्ड। तो तांकर जो इयरली एजुकेशन को से वेस्टमिनर मिनिस्टर एट ऑक्सफोर्ड रे रिसीव करथिले। ही कॉन्टैक्ट विथ लॉर्ड Ashley provide him an opportunity to come in contact with all great men of his time in politics, science and letter। तो तांको समय रे लॉर्ड एस्ली तांको सब गोटे प्रत्येक अपॉर्चुनिटी सुযোଗ देथिले जे सेमाने जो सब वर्ष समय बड़ बड़ पॉलिटिक्स आउ साइंस आउ लेटर जो रही ग्रेट ग्रेट मेन मैंने तांको सहित साक्षात पाई। हिज व्यूज ऑन लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल सेपरेशन ऑफ पावर्स नेचुरल राइट्स utilitarianism right to revolt etc okay exercises profound influence on the people। he is foremost combines of ideas and compounder of systematic thought that the world has ever known। write about the writing of John Locke। John Locke is writing जेपरिक 4 letters concerning toleration 1689 AD, 2 treatises of government 1690 AD and essay concerning on human understanding 1690 AD, the fundamental constitution for government of Carolina 1669 AD। तो किसी इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन माने राइटिंग ये गुडी को 1 मार्क्स आसी पारे आपण मन ध्यान सुनतु। नेक्स्ट टाइम देखिबा कोन व्हाट आर द इन्फ्लुएंस ऑफ लॉक। लॉक को क्यों लॉक जॉन लॉक को कौन सब प्रभावित करले कौन कौन सब सीजन थिबो। ओके लॉक वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंटेम्पोरारी कंडीशन। तो से समय जो कंटेम्पोरारी कंडीशन तो से बहुत भाव प्रभावित होते। ही वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द glorious revolution which resulted in the replacement of the absolute monarchy by reasonable government। he was also inspired माने कोन ताहा सहित से also प्रभावित होतिले इंस्पायर होतिले by writing and philosophy of thinkers like Filmer and Hobbes और Filmer को जो सब लिखा philosophical thought को नेता से बहुत प्रभावित होतिले। he also found a great inspiration from Sindhi discourse concerning government and presented his ideas systematically। से ताकर आइडिया को सिस्टमैटिकली भाव प्रेजेंट करथिले। डिस्कस लॉक्स व्यू ऑन ह्यूमन नेचर। लॉक्स कर ह्यूमन नेचर कोन थिला ना लॉक एक्सप्रेस हिज व्यू अबाउट ह्यूमन नेचर इन द एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड द सेकंड ट्रीटिस। लॉक होल्ड दैट ह्यूमन बीइंग्स आर बेसिकली डिसेंट एंड हैव बीन endowed with a natural socialist instinct। they are specially माने ह्यूमन आर स्पेशली पीस लविंग शांतिपूर्ण भाव भल पाती एंड नॉट quarrelsome। लॉक asserted human beings are as equal in the moral sense according to him माने according to लॉक को हिसाब रे him every individual enjoy certain natural rights। तो प्रत्येक इंडिविजुअल कौन किसी नेचुरल राइट्स को एंजॉय करती लाइक द राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी बंचार अधिकार स्वतंत्रता आउ संपत्ति अधिकार। ओके दज Locke assumes that men are basically decent, orderly, social minded, quite capable of ruling themselves। Explaining about Locke's view on state of nature। state no nature गोटे state of nature कौन Locke को हिसाब रे ना Locke view on state nature is the logical extension of his view on of human nature। he considered the state of nature as an era of peace, goodwill, mutual assistance and preservation। he conceives the state of nature as a pre-political rather than pre-social condition। it is an era of peace in which reason prevailed। this reason manifests itself on the principle of equality। discuss Locke's view on social contract। according to Locke to remove these inconsistencies and uncertainties of the law of nature that the individual agreed into a contract and created the state। तो से सब किसी रिमूव करने जपरी इनकन्सिस्टेंस अनसर्टेनिटीज ऑफ लॉ ऑफ नेचर से गुड़िक को रिमूव करने गोटे प्रत्येक इंडिविजुअल
एग्रीड टू इंटो ए कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएटेड स्टेट गोटे कॉन्ट्रैक्ट साइन करती आ गोटे स्टेट को गठन करती अंडर सोशल कॉन्ट्रैक्ट यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट रे ईच इंडिविजुअल एग्रीड टू क्रिएट द कम्युनिटी एज ए होल the individual surrendered only the rights to interpret the law of nature for themselves and to exclude it and punish anyone of who transgressed this right. Right, the criticism of Locke's theory of social contract. It refers to the protection of proper prosperity classes. There is a misunderstanding of human nature. It neglects minority. There is a sacrifice of legal sovereign. It means for double contract. Write about the features of Locke sovereignty. So it is community sovereignty, it is anti-autocratic, it refers to performance of duty, there is limited government and sovereignty resides with people, it is meant for legal and political sovereignty. Okay, next step देखिए 9 क्वेश्चन नंबर 9 तो राइट लॉक्स व्यू ऑन स्टेट लॉक कर स्टेट को नहीं कौन कौन व्यू थिला देखिए तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू लॉक the state was created only to remove certain inconveniences of the law of nature. तो लॉन्ग हिसाब से जो स्टेट आम क्रिएट कर खाली केवल आमर किसी सर्टेन इनकनभेन्सेन्स किसी को रिमूव करने ऑफ लॉ ऑफ द नेचर ही एज्यूम्स दैट द स्टेट इज कंपोज ऑफ 3 पावर तांको से कौन स्टेटा 3 पावर को नहीं कंपोज थाए लेजिस्लेटिव एजुकेटिव एंड जुडिशियरी ही कंसिडर्ड द लेजिस्लेटिव पावर एज द मोस्ट important one and designates as the supreme power of commonwealth but it cannot make law contrary to law of nature. Whatever the feature of a state as confined by law, the law holds that the state exists for the people who constitute it. The state according to law resists on the consent of the people. Locke state is a constitutional state. Its authority is limited by the number of factors. It operates on the principle of religious tolerance. Locke's state that is assigned purely negative function. Discuss Locke's view on revolution. तो Locke's view revolution कौन कौन view अच्छी ना Locke was a great defender of the glorious revolution. He asserted that the government is a trust which has been set up for the fulfillment of certain objectives. If it fails to carry out these objectives, the people have to right to revolt again. माने किसी सरकार जति तांगर किसी एगेंस्ट हम मध्ये बर्तन मध्ये करथांती किसी जति विद्रोह बेले करथांती ओके to revolt against the government and change it. Similarly, if the government transgresses and limits prescribed for it and violates the basic rights which the people retain with them at a time of creation of state, then the people have right to revolt. Discuss Locke's idea on property. Locke property को नहीं कौन idea ना Locke states the individuals enter into contract and institute the state to preserve property. The state can protect and the property of the individual through interpretation of the law of nature. He asserts that the right to private property has received the approval and sanction of the society. He considered the institution of private property as a guarantee for individual liberties. Discuss Locke's idea on individualism. The government is for individual. He refers to Pol.Sci. He has given importance to natural law. Right to property prevails throughout the state. People have right to revolt against the government. तो लॉन्ग इंडिविजुअल आइडिया कौन कौन थिला ना गवर्नमेंट होची माने लोक मानक पई इंडिविजुअल ही रिफर्स टू पोलिस स्टेट ही हैज गिवन इंपोर्टेंस टू नेचुरल लॉ राइट टू प्रॉपर्टी प्रिविलेज थ्रूआउट द स्टेट पीपुल हैव राइट टू रिवोल्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट पीपुल हैव अधिकार अछि जे सेमान सरकार को विरोध रे मध्य किछि विद्रोह कर परबे व्हाट आर द पावर्स ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट as Locke has predicted तो टू फिक्स एथिकल स्टैंडर्ड्स इम्पार्टियल जजमेंट प्रोटेक्शन ऑफ जनरल इंटरेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स सेपरेशन ऑफ पावर्स तो किसी पावर लिमिट थिला जहाँ को लॉक कौन प्रेडिक्ट करथिले डिस्कस अबाउट जॉन लॉक कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल फिलोसफी को जॉन लॉक कंट्रीब्यूशन कौन कौन ना हिज आइडिया ऑन ह्यूमन नेचर स्टेट ऑफ नेचर सेपरेशन ऑफ पावर लिमिटेड गवर्नमेंट इंडिविजुअल फ्रीडम राइट टू रेसिस्ट द गवर्नमेंट एंड रिलीजियस
टॉलरेंस तो किसी कंट्रीब्यूशन थिला लॉक करो। बर्तमान देखा राइट ए ब्रीफ नोट जीन जैक्वी रूसो रूसो को देखे तो यह वन मार्क्स क्वेश्चन गुड़े आसो। जीन जैक्वी रूसो वाज बोर्न इन 1712 एडी तो 1712 में रूसो जन्मग्रहण करते इन जेनेवा। रूसो had to lead a life of poverty and deprivation. He could neither receive proper education nor find a patron. The political thought of Rousseau reflects the influence of his environment and various political philosophers. He was influenced by Plato. तो रूसो प्लाटो द्वारा कौन प्रभावित होते आउ मॉन्टेस्क्यू मध्य हब्स एमान द्वारा। हिज राइटिंग्स स्टूड फॉर द abolition of right for the privileged classes and favored their extension to the middle and lower middle classes. He died in 1778 AD. 1778 में से मृत्युवरण करथिले। Write about the writings of Rousseau. Rousseau को किसी writings देखिबा तो the discourse of arts and science 1749, the discourse of the origin and inequality 1754, an introduction to political economy 1758, the social contract 1762, the email 1762. Discuss about the influence on Rousseau. Rousseau को influence करो। The political thoughts of Rousseau reflects the influence of his environment. He was also influenced by various political philosophers. He is indebted to Plato for two reasons. तो प्लाटो को रीजन कौन ना पॉलिटिकल सब्जेक्शन इन एसेंशियली एथिकल एंड द कम्युनिटी रिप्रेजेंट इन हाई मोरल ऑर्डर। ही वाज पार्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉक थ्योरी ऑफ कंसेंट नेचुरल राइट्स द सोब्रेशन ऑफ द कम्युनिटी। सिमिलरली बोरोड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम मॉन्टेस्क्यू। तो सब मान द्वारा मैंने कहार कौन देखो हब्स कर लॉक कर आउ मॉन्टेस्क्यू जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आइडिया तो यहाँ द्वारा सब भाव प्रभावित होते। एक्सप्लेन रूसो बियॉन्ड ह्यूमन नेचर। तो ह्यूमन नेचर रूसो कौन करते अकॉर्डिंग टू रूसो man was basically good and it is only the wrong social action which make him wicked. माने मनुष्य भल कि किसी जो रंग सोशल एक्शन सामाजिक किसी कार्यकलाप किसी भूल हो जाए आउ कि दुर्बल करती। ही ओल्ड दैट मैन इज गवर्न बाय टू इंसिस्ट सेल्फ लव एंड म्यूचुअल एड। तो दुईटा कौन तार परिचालित हुए जपरी सेल्फ लव एंड म्यूचुअल एड। ही आसेड द conscience helps in resolving the conflict between two instincts. He again viewed that when self-interest goes astray, it gives rise to pride, and his pride is the root cause of the most of evil. Discuss the basic feature of Rousseau social contract. The basic feature of Rousseau social contract can be summed up as under: the individual is made to surrender everything to society. The individual surrenders all this right not to any individual but to a body of which he himself is a part. The contract gives rise to an organic society. The contract leads to material and moral transformation of the individual. Explain about Rousseau's view on general will. The general will of Rousseau is nothing but the sum of total of all wills of the individual, which were based on reason and foresight in the individual. The general will of Rousseau was indivisible to one was sparing. It also cannot represent by anybody. General will कौन गोटे anybody represent करनी। The general will is always correct and it cannot be eliminated. What were the criticism of Rousseau's theory of general? तो general will को theory मध्य समालोचना करा जायछि। This concept is criticized as vague and confusing. मैंने बहुत confuse आपन बुझि पारथे। It is difficult to distinguish general will from the will of all. His division of individual will as essential and non-essential is quite impossible. His assertion of absolute power to general will may lead to dictatorship. The theory of general will is contrary to his theory of social contract. Discuss Rousseau's idea on sovereignty. Rousseau based sovereignty is not any single or group of a person but in the community as a whole through the medium of a general will. Thus he gives the impression that he believes in sovereignty of the people. But if we study his idea deeply, हम कौन ताकर आइडिया को गभीर भाव पढ़ा पाठ करवा then it shows तापर देखा जे he gives idea of a popular माने से कहे पॉपुलर जनप्रिय सार्वभौमत्व से कहते बट इन रियलिटी ही गिव्स एब्सोल्यूट पावर टू द
रूलर किंतु रियलिटी कहगले से रूलर शासक को एब्सोल्यूट पावर को दौरान ओके डिस्कस अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रूसो टू पॉलिटिकल थॉट रूसो कंट्रीब्यूशन कौन अच्छी ना ही एम्फासाइज द इंपोर्टेंस ऑफ स्टेट इन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल लाइफ रे स्टेट रो इंपोर्टेंस कौन अच्छी से एम्फासाइज करछंती ह्यूज थ्योरी ऑफ पॉपुलर सोचंती से जनप्रिय सार्वभौमत्व कौन थ्योरी आनथिले रूसो वन मास आसपारी he developed the concept of a nation state by the laying emphasis on the principle of common good and common interest in general will his concept of general will his utilitarian और his concept of common good तो ये थ्री किसी 3 मास क्वेश्चन आंसर जो मैंने कि नोट चाहते डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक दे देछि आपन जॉइन होगी पाइबे थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो नेक्स्ट टाइम यूनिट 4 जहाँ कि जेएस मिल और कार्ल मार्क्स को समस्त इंपोर्टेंट 3 मास क्वेश्चन जो थी कि आम गुड़ाई 1 मास क्वेश्चन डिस्कसन करदेबा।